Rotational motion, 24 January, shift 2. A solid sphere is rolling without slipping on a horizontal plane. This is the horizontal plane and this is the solid sphere. The ratio of the linear kinetic energy of the center of mass. We all know very well, center of mass will move only translatory motion. So we have to calculate the kinetic energy of the translatory motion of the sphere in rotational kinetic energy. Sphere will rotate with the angular speed omega. This is the VCM we can say. And we have to calculate the kinetic energy translation upon kinetic energy rotation. That we have to calculate. We know kinetic energy translation क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर. kinetic energy rotation क्या होती है, या तो आप लिखोगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और बेटर आई टोल्ड यू टू राइट हाफ mv स्क्वायर. इसको हाफ mv स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, हाफ mv स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब आप हाफ mv स्क्वायर से हाफ mv स्क्वायर कट कर दोगे. नो यू विल राइट इट इज गिवन बाई 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. एंड वी ऑल नो वेरी वेल k square upon r square for the solid sphere is given by 2 by 5. So kinetic energy translation upon kinetic energy rotation will be written as 1 upon 2 upon 5, means 5 upon 2 or 5 is to 2. So right answer of the problem will be option 2, that is 5 is to 2.